Good morning, all. In this fresh morning of Saturday, let's start the session with a market outlook. I'm Vidyan Sound from GEPL headquarter and the research team. Just want to share my screen here. We'll start first technical outlook of the market. Let's start with NIFTY outlook. In the last trading session, NIFTY has closed at 16,719 level. If we see on the weekly chart, there is a upward rally since last 4 to 5 weeks, and now immediate hurdle for the NIFTY is 16,800 level. So NIFTY मेजर रेजिस्टेंस के आसपास कल क्लोज हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्विंग टॉप है वो 16,793 मतलब 16,800 के आसपास है. If Nifty sustains about 16,800 level, then we will see a trend change from currently Nifty is in a neutral trend. If it sustains above 16,800 mark, then Nifty will move in a positive territory from neutral zone. So 16,800 के ऊपर निफ्टी अगर जाता है तो निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में बरकरार हो सकता है. तो we have to wait for some more sessions for confirmation of above if Nifty sustains above 16,800 mark. On the downside, Nifty has immediate strong support zone is at 16,359. For the short to medium term trader, 16,350 is a crucial support zone for the Nifty. If it goes below that level, then we will see some more correction once again. Otherwise, it will move on the upside only. मेजर सपोर्ट की बात करें तो 16,359 और 16,000 ये दो मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए बन के आ रहे हैं. ऊपर में 16,800 अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली निफ्टी 17,000 से लेकर 17,500 और 18,000 तक आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है. तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी देखें तो न्यूट्रल जोन में है और वो पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा है. तो हमें कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. Now let's move on to the broad indices, that is Nifty Mid Cap 50. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये this is the monthly chart of Nifty Mid Cap 50. यहाँ पे 8,038 के आसपास Nifty Mid Cap 100 क्लोज हुआ है, which is above previous months high. तो यहाँ पे कंफर्मेशन अच्छा है. निफ्टी मिड कैप 100 में आपको आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली आप देख सकते हो. निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है निफ्टी और निफ्टी मिड कैप के कंपैरिजन में. तो हमारी आपको सलाह ये रहेगी कि आप निफ्टी स्मॉल कैप काउंटर से फिलहाल अवॉइड कीजिए, या वहां पे आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा रुकिए, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे. अगर ट्रेंड सस्टेन होता है तो ये हम डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं. बट निफ्टी और निफ्टी मिड कैप 50 टॉप 50 कंपनीज है, उस पर आप डेफिनेटली आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप उस हिसाब से कर सकते हो. निफ्टी मिड कैप 100 की कुछ कंपनियां मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जैसे कि टाटा पावर है, बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गई, ट्रेंट और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों में यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन ट्रेड इन दिस कंपनी फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. सेक्टर स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो 3-4 सेक्टर्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे. First is Nifty Auto is giving a strong confirmation and it's sustaining above its multi-year high and near a lifetime high. So Nifty Auto, this is the one sector which is in a strong positive mode. और Nifty Auto में आप मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड ये कंपनीज आप डेफिनेटली देख सकते हैं. निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इट इज सस्टेनिंग अबाउट इट्स प्रीवियस मंथ्स हाई एंड ट्रेंड इज मोर ऑन अ बुलिश साइड. सो इफ वी सी बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हालांकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक ये आप ये देख सकते हो. नेक्स्ट सेक्टर इज निफ्टी आईटी. यहाँ पे बॉटमिंग आउट की प्रोसेस हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड काफी कम है. निफ्टी आईटी में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. एंड एफएमसीजी काउंटर इज आल्सो इन अ स्ट्रांगली बुलिश मोड. एफएमसीजी में आप देखेंगे तो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट या उसमें ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हो.
and last sector is capital goods, and capital goods from Larsen and Toubro is one company, it's from capital goods. तो डेफिनेटली आप उसमें भी मीडियम टर्म के हिसाब से आप डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सो दिस इज फॉर द टेक्निकल साइड इक्विटी. निफ्टी के लेवल फिर से एक बार आपको दोहराना चाहूंगा. अपवर्ड इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन इज 16,800. इफ इट सस्टेन्स अबाउट दैट लेवल then Nifty will go in a positive mode and it will move up till 17,000 and 17,500 and 18,000 level in the coming few weeks or month. And on the immediate support zone is 16,350 and 16,000 level that will act as a strong support zone for the market. So that's it for the technical side equity. And now I'm handing over to fundamental research to Harshad Gadekar. He's a fundamental research analyst from GEPL headquarters. Now, Harshad, over to you. Thank you. Good morning, all. Today we are here to discuss the fundamental updates regarding the markets, how we should plan our investments, and how where we are standing in terms of valuation. So these things we will discuss today. So I hope my screen is visible to all of you. Yes. Yeah. So since last 6 months, we are seeing so much of discussions on the interest rate, inflation, recession. Nifty is also down by 12% from its recent high. So these are the things which are the reason of fear for the retail investors, and that may trigger the deferment of their investments. But today we are here to guide you on where we should invest, whether we should invest or not in these situations, how we are panning out our valuations. So these are the things of our topic of discussions. So I will just go over through the worries of the market, what investors are fearing right now. So as we all know that everyone is fearing the inflation, and the inflation is on a higher side, and that is impacting the margins of the companies, and so on and so forth. Reasons we are deferring our investments. So inflation is not a permanent thing. Inflation has to come back to its mean, and as we are seeing, inflation is reported on year-on-year basis. So let's say if any commodity was at 100 rupees last year, and at same month this year it is 120, then we will see inflation is 20%. Now, as we are discussing that inflation is going to rise, then we are expecting the inflation to rise more than 20% or to stable at 20%. Now, to stay to have a stability at 20%, this 120 commodities next year have to jump towards 144. So this kind of jump into the commodity prices is not usual. These are the combination of multiple factors which we recently witnessed in terms of geopolitical conflicts and supply chain disruptions after opening up of economy. So these things are now smoothing out, and this will also impact on the commodity prices. So we don't think that the inflation which we are seeing around these 7 to 8% will stay more than 12 months. So how we should plan our investments in this scenario? So here is the picture of the price to earning multiples of the Nifty. So P ratio we widely use, and this is the data from 2000 to 2022. लगभग 22 साल का data है, and you can see the heat map which is in red and green area, and the highlighted red round circle at the month of June, which is 19. So लगभग आप 2015 से देखोगे तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 के ऊपर सस्टेन रहा है, और पहली बार ड्यू टू दी एफआई सेलिंग एंड वेरियस रीजंस जो मार्केट में हमने करेक्शन देखा, उसके चलते निफ्टी का पी जो है लगभग 5 से 6 साल के एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है. सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी. We should not let the news noises defer our investment,
and we should purely focus on the data part. So having the help of data will get us to the right investment decisions. Now, this is a little bit technical part. This is the Nifty 500 weekly chart, जिसमें भारत की top 500 companies है. ऊपर की तरफ चार्ट है और नीचे की तरफ stocks above 200 EMA है. तो जो आप रेड सर्कल में वो जो हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो, that is the bottom of that stocks above 200 EMA, and whenever that line has touched the bottom part, we have seen a nice rebound in the broader market. So that is the situation right now also. So this is also in favor of our investment decisions. And then next, this is the earnings yield. What is earnings yield? If we inverse the PE ratio, then we get the earnings yield. Let's say if the PE ratio is 20, then if we inverse that PE ratio and represent it into the percentage form, we will have a earnings yield. So as you can see, the 5.4 and 5.2, which are the recent figures. So 5.4 kind of earnings yield we had in the COVID-19 pandemic fall, and the same earning yields we are also witnessing right now. So this is the thing. This also provides us opportunity for an investment or planning to have an investment into the market. Then this is the Nifty 50's EPS chart. जो निफ्टी की 50 कंपनीज है उनका अर्निंग पर शेयर है, उसका एक चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आप देखोगे कि निफ्टी 50 में एक ग्रोथ का और नो ग्रोथ का साइकिल जो है वो हमेशा चलता रहता है. तो राइट नाउ आप देखोगे आफ्टर कोविड-19 और आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, वी हैड सीन अ नाइस एक्सपोनेंशियल जंप इनटू the 50 companies. So right now we are not in the zone of no growth, but we are in the zone of growth mode. So this is a bull market correction in our point of view. And as we are seeing, the EPS of the Nifty has reported a strong growth. Then this is a quite interesting chart. This is one of the parameter we are discussing here. So we know that price to earning ratio is compared with its historical averages to gauge the judgment that where we are standing, right? So if the average is, let's say, 20 and Nifty P is 23, so we will say Nifty is trading at 3 points premium, right? And if it is less than 20, if it is trading at 15, then we will see say that the Nifty is trading at 5 points discount to its averages, right? So ये 5 साल का और 7 साल का प्रीमियम और डिस्काउंट है निफ्टी 50 पी का. तो आप देखिए ये जो 7 इयर्स का प्रीमियम डिस्काउंट का चार्ट है, लगभग 2008 का जो करेक्शन था उस वक्त निफ्टी के 7 ईयर एवरेज से निफ्टी का पी जो है 5 पॉइंट्स के डिस्काउंट पे चल रहा था. फास्ट फॉरवर्ड पैंडेमिक फॉल, उसमें भी लगभग 5 to 6% का डिस्काउंट था. लेकिन आप यहाँ पे अभी अगर देखोगे तो दैट लाइन हैज आल्सो ब्रीच द रेड डॉटेड लाइन, सो व्हिच मींस वी आर मोर डिस्काउंट, वी आर ट्रेडिंग एट नाउ मोर डिस्काउंट टू ऑल द हिस्टोरिकल क्राइसिस. एंड उसके नीचे 5 साल का जो एवरेज है निफ्टी 50 का, उसका भी प्रीमियम और डिस्काउंट का चार्ट है. सो अगेन देखिए 2003 से 8 जो मेगा बुल रन आया था, उससे पहले जो फॉल आया था 2000 से लेके 2003 के बीच में, उस वक्त मार्केट भी एक साइडवेज टू डाउनवर्ड टेरिटरी में था. तो वहां पे भी 5 पॉइंट्स का डिस्काउंट था टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस. देन 2008 and 9 region zone, that time also we saw 6.38 points discount, and in the pandemic year, period, we also saw 6 point of discount to 5-year averages. अभी की क्या सिचुएशन है? तो अभी लगभग 8 पॉइंट्स का डिस्काउंट पे चल रहे हैं. तो
we have crossed all the discounts historically, and this should single I think this should single alone factor that should enable us to or should enable us to think that we should invest in the markets right now. And you must be thinking that okay, in 2020 market failed by 50%, 40%. In 2008 market also failed by 60%, and in 2002 and 2003 market also saw a major correction, 35%. And right now we are fallen by only 12%. And how this ratio or this chart have gone to this much of level, that's the quite fair question. But what happened is P ratio is the a function of price and earnings. So though Nifty is fallen by 12%, but the earnings, that is the denominator, EPS, which we saw, which rised exponentially, that has bring down the P ratio much to a much lower level. So that is the main reason or prime reason. That's why we are seeing this kind of discount to historical averages despite of 12% correction. And many of us are waiting for Nifty to fall by 40 to 50% to plan our investment or to grab the golden opportunity like we saw into the COVID-19 or in 2008, that market were down by 40-50%. And you are always listening into the seminars that you have invested in 2020 or 2008, you were sitting on the multi-baggers. And right now Nifty is fallen by only 12%. So we are waiting for some of our investment or traders, investors are waiting for 40-50 kind of correction. But my friends, I want to tell a fact here. I was just going through the 52-week high to CMP, that is current market price correction. So we observe that there are 500 stocks in NSE 500. And out of that, all are the stocks are trading at 30% lower than their 52-week high. So the correction which you are waiting for, the 40-50 kind of correction you are waiting is already has been done, despite Nifty is down by 12%. You also wondered that Nifty is down by only 12% from the recent CMP. But what about your portfolio stocks that are down by 20, 25, 30%? So that is the real fault. We should go ahead from the Nifty 50 and look towards the Nifty 500 stocks. And you will find that the average correction in Nifty 500 stock is 30%. So the opportunity which you are waiting is already there. It is hidden due to the various noises and news which we are seeing on the daily basis. So I hope these strong points are clear to all of you. Now, all of you think that if I invested right now, I should not be in a red position, or my M2M should not be in a red over the span of some 2 to 3 years. So that is also that a factor we have also considered. And we have literally conducted a study wherein we invested, we have calculated the Nifty returns on 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, and so on, which you are seeing on your screens. So जैसे कि आप देख रहे हो, लेट्स से मैं ये 2 साल का एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी, यानी आपने निवेश किया और 2 साल बाद अगर निफ्टी से पैसा निकालते हो या निफ्टी आप देखते हो, तो निफ्टी नेगेटिव रहने के चांसेस कितने? तो आउट ऑफ 258 incidents or months, only 21% times निफ्टी has been in red. बट आप जैसी लंबी अवधि की तरफ जाते हो, यहाँ पे देखिए 3 साल का आप अगर नजरिया रखते हो, तो नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी इज ओनली 9%. So out of 246 incident, only 9% times Nifty has been in negative. और अगर आप जैसे ही आगे जाते हो 5 साल, तो 5 साल में almost 1%, or you can say it is negligible. And 7 year, 10 year, and 13 year, it is 0%. So my friends, you should always have an investment horizon of at least 3 years. अगर आप 3 साल में निफ्टी में निवेशित रहते हो, अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहते हो,
तो आपके नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी के चांसेस जो है वो बेहद कम है। अगर एनीथिंग विच इज लेस देन 3 years, वो 2 साल 1 साल का जो नजरिया है, तो आप देखोगे वहां पे 26-20% का नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी है। सो वहां पे रिस्क ज्यादा है ड्यू टू दी शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, मार्केट वोलेटिलिटी। तो 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक तो वैल्यूएशंस, तो वो भी काफी अच्छे हैं, जैसा हमने प्रीमियम और डिस्काउंट फैक्टर्स देखा। निफ्टी का 2022 तक का प्राइस टू अर्निंग का डेटा देखा, सो दैट इज आल्सो इन आवर फेवर्स। then we also saw how much time we should be remain invested. So at least 3 years plus we should be invested into the Nifty 50 or in market. Then एक PEG रेशो करके कंसेप्ट है, तो P यानी प्राइस टू अर्निंग, ये सब हम जानते हैं, और उसी के नीचे जो EPS ग्रोथ है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है PEG रेशो। तो यहाँ पे PEG रेशो का मतलब क्या है, जितने प्रतिशत से अर्निंग्स ग्रो हो रही है उतना ही आपका PE होना चाहिए। अगर अर्निंग्स 20% से ग्रो हो रही है तो आपका PE भी 20 होना चाहिए। सो दिस इज द सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशो। सो वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड केस स्टडी, जिसमें हमने 2003 से 2008 का बुल रन देखा। तो वहां पे भी हमें सेम केस मिली जिसमें PEG रेशो वाज लेस देन 1, यानी EPS की ग्रोथ ज्यादा थी एज कंपेयर टू द प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो उस केस में PEG रेशो लेस देन 1 होता है। तो 2003 से 2008 के बुल रन में 2004 तक इस तरह का PEG रेशो था। और अभी की सिचुएशन आप देखोगे तो after opening up of economy, the PEG ratio is also less than 1, right? Obviously, जो यहाँ पे आप नंबर्स देख रहे होंगे 2021 के अगस्त, 2021 जून 2021, तो इसमें लाजमी है कि PEG रेशो लेस देन 1 होना, क्योंकि 2020 में अर्निंग्स तो थे ही नहीं कंपनीज के, और 2021 में आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी ये PEG रेशो बाय डिफॉल्ट लेस देन 1 आ रहा है। बट अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करते हो अभी अप्रैल मई जून का, तो लास्ट ईयर में भी अप्रैल मई जून में इकोनॉमी तो पूरी तरह से ओपन थी। सो दैट इज नॉट द that should not be the reason that COVID was there. So this last 3-4 months of PEG ratio are quite fair. So see here also the PEG ratio is 0.4 and 0.45. So the earnings are growing 50% more than the P ratio. So यहाँ पे भी हमें क्लियर कट सिग्नल मिलता है कि निफ्टी जो है अपने फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। देन ये एक सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस है, जो अलग अलग करेक्शन में बीट 2002 से लेके 2003 का, 2008, 2020 और ये लास्ट 8-9 महीने से जो हम देख रहे हैं अक्टूबर 2021 से। तो इन केसेस में ये जो चार्ट्स हैं ये बताते हैं कि कौन से सेक्टर ने कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई थी। तो रियल्टी और मेटल जो है ये इन सेक्टर्स में, जैसे FMCG है, हेल्थ केयर है, IT है, इनमें जो है वो लिस्ट करेक्शन आया है, एक्सेप्ट फॉर द 2003 जिसमें तो दैट वाज द .com बबल, द फॉल वाज मेनली लेड बाय द IT कंपनीज। देखिए कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है 2000 जो भी करेक्शंस के बाद मार्केट उठा है उसके बाद कौन से सेक्टर्स ने अच्छा किया है। तो यहाँ पे आप 6 चार्ट्स या 6 टेबल्स देख रहे होंगे। तो टॉप के जो 3 है, तो निफ्टी टॉप से लेके जो बॉटम बनाया एंड अगेन फ्रॉम द बॉटम टू रीगेन दैट टॉप, तो ये जो वी शेप रिकवरी थी इस दौरान कौन से सेक्टर ने परफॉर्म अच्छा किया, ये ऊपर के 3 चार्ट बताते हैं। और ये जो नीचे के 3 चार्ट है, निफ्टी बॉटम से अगेन दैट हाई तो रिक्लेम किया ही, बट उसके बाद जो ऑल टाइम हाई की जो जर्नी थी, बुल रन की जो जर्नी थी, सो उस बीच में कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। सो हियर यू कैन सी capital goods, consumer durables, banking stocks, information technology stocks, and metal stocks. Recently, we have seen a nice performance, and this tells us the performance of the various indices of the market. Now,
ये जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का करेक्शन और कितने वीक करेक्शन में, इसका एक हिस्टोरिकल चार्ट हमने आपके सामने रखा है। तो ये जो पहला वाला चार्ट है ये आप बताता है। तो देखिए ऑन एन एवरेज जो करेक्शन रहा है निफ्टी का दैट हैज बीन अराउंड 28%, एंड जो रिसेंट लो लगाया था निफ्टी ने तो वहां तक जो अगर हम टॉप से करेक्शन देखें तो 18% था। तो वर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क जो है यहाँ पे सिर्फ 10% फॉल का है निफ्टी में, एंड अपसाइड देखोगे तो अपसाइड इज क्वाइट बिग, जैसा हमने वैल्यूएशंस में डिस्कस किया ही कि ऑल द पैरामीटर्स आर वैल्यू। सो यहाँ पे जो डाउन साइड रिस्क थे इन निफ्टी स्पेसिफिक एज पर दिस पैरामीटर इज ओनली 10%, एंड द नंबर ऑफ वीक spent by Nifty in correction, which you are seeing in the bottom chart. So लगभग 37 weeks has been spent by the Nifty in the correction from October 2021, and that has surpassed the historical averages. And that is one of the highest number of spent by the Nifty in the correction after 2015. तो ये जो 53 का जो नंबर है आप देखोगे तो दैट वाज इन 2015, एंड 2015 के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ जो वीक्स थे दैट हैज बीन स्पेंट बाय द निफ्टी. So this also tells that the things are more towards the historical averages, and the downside risk in the Nifty here is less. Time-wise correction can be a watch because of the market enthusiasm and the participation by the various brokers, traders, investors. So that can be a case for the time-wise correction. But as we know that when market goes, even if it goes sideways for another 1 or 2 years, but in the third year market gets doubled, and your CAGR all the compensation of your 2 years of patience is fulfilled in the third year. So that's the case like a bamboo tree. So that should not be a concern for all of us. Now we are here with some of the portfolios for all of you. So these are the portfolios. It is a large cap portfolio. So those who prefer to choose the large caps, so we have this one portfolio which has 80% large caps and 20% mid and small caps. Then these are the industry wise allocation. This is the performance of that portfolio. So red line is the performance of our portfolio, and the blue line is the Nifty 100's performance. So it has beaten the Nifty 100 with very handsome returns. And these are the some parameters. And second portfolio we are coming with a FLEXI cap approach. So जिसमें 25% large caps है और लगभग 75% mid and small caps है. आप में से जिनको mid and small caps में रुचि है वो mid and small caps में निवेश कर सकते हैं. And all of these stocks have been chosen with a strong earnings visibility ahead. So these are the two portfolios. This PPT or these portfolios you can avail from your dealers. आपके जो भी dealers है या GEPL का help desk है, you can call it, and we have released it also. So you can utilize these portfolios for investment. So that's all from my side. Now you all can ask your questions. So we will open floor for the question and answers. Thank you. Please send me the presentation which you have done now, and Yes. especially the two script wise this thing, your portfolio. Sure. Please Yeah. send. Yeah. And I also would like to emphasize one point that right now we are doing portfolio reviews of our clients. So जिसमें हम देखते हैं कि काफी सारे clients ने कुछ टिप्स के ऊपर या किसी की सुनी सुनाई बातों पे अलग अलग तरह के शेयर्स लिए होते हैं. That shares may not be good for good fundamentally. So and some of the clients portfolio we are reviewing जिसमें
उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं 150, 200, 100 इस तरह के नंबर ऑफ स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियोज में होते हैं। तो आप अगर वेटेज स्टॉक्स का देखने जाओगे तो दैट इज बेयरली 1% और 2%। इवन दैट स्टॉक्स गेट डबल्ड। अगर ये वो स्टॉक आपको दुगना भी रिटर्न देता है तो वो 2% का आपके पोर्टफोलियो पे बन जाएगा 4%। And it is practically difficult to track all the 100 stocks or 150 stocks for a retail investor, and that also not help us to generate the alpha. So I request all of you that please get your portfolios reviewed, check the number of stocks, also check the quality of the stocks, and we are also open for the portfolio reviews. You can ask to your dealer for your portfolio reviews. We will review which stocks to keep there, which stocks should have higher allocation, which stocks should be added to newly to the portfolio. So that will help to generate you a good returns. This is the thing we all should be aware of. Arshad, you have a question from Mr. Surendra Juneja. Yeah, good morning to you. I'm Surinder Singh Juneja from Pune. Sir, my problem is that I have, say, you can tell me like I have zero knowledge about stock market, but I have invested and I've opened an account with you, and I'm only following your tips, strictly your tips. But I want to learn in detail because now I'm a senior citizen. I want to learn in details. I don't know anything about technical analysis and many other things. So, Mr. Can you make some arrangement for classes? Because I don't mind even paying for the classes. But, I want to learn in detail so that, I don't have to depend upon the tips from others or from you also. I can apply my mind and I can buy some stocks. Yes, sir, definitely. We'll look this positively and we'll arrange some technical analysis session for our clients. Yeah, like because just now, whatever you told me about technical, so like, I don't say 1%, 2%, I understood, but then, again, daily, then I also get scared, like, I don't want my money to be, put in the drain. So I now for 2-3 years, I'm just strictly following your tips only and your notifications. So you can check my stocks also. Okay. I've got limited 8 to 10 stocks only I do. And that too strictly in cash, no F&O. Okay. But I'm interested in F&O, in options and futures also. Okay. Definitely, we will arrange technical sessions for the clients. Okay. Thanks a lot. Yeah. Thank you. Anybody else has any questions or clarifications or suggestions? Please, you can raise your hands or you could send us a message on chat. We'll be happy to answer them for you. There's a question from Bezad Debo. Yeah. So in your charts, you had shown the historical price to earnings. So I presume that you've taken the historical earnings. So what is your outlook on forward earnings? And also what parameters have you seen when you've performed your fundamental analysis? These two questions. Thanks. Right. So let me just put you to the presentation again. Yeah. So your question is that this price to earning ratio are based on the reset earning or the historical one. What is our outlook for the forward earnings? Yeah. Right. So the forward earnings are a largely function of the economic activities and the performance of the companies. So as far as Q1 FY23 is concerned, though the results are not that quite number of samples are not there because only few of the companies have reported result. So the common observation we are seeing not from just Q1 FY23, but on the last quarter also, that we are seeing growth in the top line, that is sales. So revenue में growth companies की अभी भी बरकरार है. So companies में problem कहाँ पे आ रही है? So that was towards the margin side, and that is only due to the inflation which we saw. So companies took that hit on their P&L account.
So that's why the bottom line realization has been a problem for the companies. But the demand in the economy is quite strong, and the revenue figures of the results are also we are seeing robust. Even for example, if I have to take an example of automobile space, so which requires a very high ticket of investment from the client or customer. So Maruti Suzuki and other passenger vehicle manufacturers are having a booking of 2 to 3 months advance booking. So some of their flagship models have booking of 2 to 3 months in advance. From the IT space also, we listen to the con calls of the TCS or Infosys. They again are saying they are not seeing any signs of inflation. In fact, they have hired more employees in the Q1 FY23, and the deal wins is quite strong. So broadly, if you look at the demand outlook is quite strong. Economic indicators are indicating well. The GST collections are well. Only the point here is the inflation, and again that we discussed, it is not inflation or commodity is not a stock that it will grow 2 to 3 times over the span of 2 to 3 years. So it has to revert back to the mean. So इन कंपनीज ने अभी जो प्राइस हाइक्स लिए हैं, FMCG हो चाहे गाड़ियों के दाम जो अभी बढ़े हैं, तो जब इन्फ्लेशन कर्व आउट होगा ड्यू टू दी हायर इंटरेस्ट रेट, आपके जो कमोडिटी प्राइसेस है वो कूल ऑफ होंगे, तो कंपनीज को क्या होगा, रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा. लेकिन जो अभी प्राइसेस बढ़ाए हैं वो कम नहीं करेंगे. पार्ले जी में से कुछ ग्राम अगर कम कर दिए अभी, तो बाद में वो बढ़ाने वाले नहीं है. सो बाद में जो कमोडिटीज सॉफ्ट होने वाली है, प्राइसेस सॉफ्ट होने वाले, उनका बेनिफिट आप देखोगे कि आफ्टर 12 to 18 months all of these companies will started reporting the expansion in the margin, right? So these are the cycles of the market, and we must take an holistic approach. So the outlook for the Nifty 50 EPS, which was your key question. So right now the EPS is 750, and the estimate for FY23 and 4 is of 900 EPS. So based on the forward earnings, तो forward P अगर हम देखें तो we are trading at 17 and 80 times for the forward earning. I hope your question is answered. Yeah, and what parameters have you considered for your fundamental analysis on your stocks? Yes, we should always consider first of all the sector in which the company is, right? And we should look forward. Like if you go to the study for a metal stock, obviously, yeah, the last 12 to 18 months they have reported a quite strong growth, but that situation is not there in future. So we must focus on the future earnings of the company. Then we should also focus on the return ratios such as return on capital employed, return on equity, then how much the debt company is having, or whether the company is able to service that debt. So these are the things we must prioritize. And also we should focus on the diversified approach. Too much of diversification is also a problem. We should stick to 20 to 25% of the stocks max. So these are the combination of factors which we generally use while analyzing a stock and a portfolio. Does anybody else have any last minute questions before we end this session? Anything on chat? Any last minute? If there's nothing else, I would, on behalf of GEPL, like to thank each and every one of you for attending this session. And we hope with your feedbacks, we can have more of such sessions. So if you've liked this session, please send us a mail at info@gplcapital.com or support@gplcapital.com, and we can bring you more such sessions. And we thank our research analysts, Vidyan and Harshad and Pushkaraj, for making it an interesting session. Thank you everyone for taking time off and being with us this morning. Thank you so much. Thank you.